Thank you so much for giving your time. Yeah, thank you so much for having me. Let's see, we are live now or not. ये एक न्यू फीचर है यूट्यूब का. You are able to understand Hindi, right? Yeah, Hindi. I know pure Hindi and English. Okay. Like it doesn't allow you to go live horizontally. It's just the vertical Okay. feature. So So that's why. is it only for a mobile applications or like we I can guess use a yes. Yes, because I checked on the web app, laptop? but it's not allowing you. It's not working. Yeah, It's it's nice. has only in the mobile they have given the feature. Okay. Someone is going to join or not? I don't know. I You have have more informed in my friends YouTube there. channel, but let's see. Even though my Insta I have informed. Oh, on YouTube it is showing horizontally only. Okay. See, I don't know. Oh, yeah, so that's it goes nice. down. मैं इतना छोटा सा कैसे लग रहा हूँ? It's fine. At least it's showing. दिख तो रहा है कुछ. Otherwise, sometimes ऐसे होता है कि यूट्यूब पे दिखता नहीं है कुछ चीजें. Hmm. But here I can't see anything like live. Okay, only you can see the live. I can't see on your channel. It should be visible, right? Is it not public? It is public. In your Try to YouTube. switch from the Okay, different wait. laptop or mobile. Yeah. It's working. It's working. Now you can It's see. working, right? Yeah. Oh, okay. It's vertical only. Okay, great, great, great. I have informed in my Insta, but no one is joining, I So guess. there are people are joining. See, there are two people, I guess, have joined. हम ही लोग हैं Uh, क्या दो? have you done live before? No, I didn't. I'm planning once I get that Hmm. monetization. After that, only Okay, I'm okay. planning to go live. Before Hmm. that, maybe I'll do collaboration with new students who have just arrived for January intake. Hmm. But as of now, I'm not planning to do any live sessions because live is something like obviously if I go live, there will be a lot of question or maybe if people join, they will ask. So it's like at least I should have that much of audience to attend that live session. Makes sense. Makes sense. So Makes sense. you have more than mine, so that's actually good. No, Yeah, that's good. you will gain audience. Your content is really nice. I have seen many videos, so it's good. People I will have join you. just I have just recently started like Yes, कुछ yes. ही दिन हो गए मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं बना रही हूँ. But Hmm. from now maybe I'll be regular to my YouTube videos. ओके, आप क्या एक स्टूडेंट हो या कैसे आपका बैकग्राउंड अगर? Okay, so first thing, my name is Rajeshwari. I'm हुँ, from Hyderabad and ओके, I have come here as an international student. ओके। So I'm studying on my master degree in course digital marketing. ओह! वेरी नाइस डिजिटल मार्केटिंग So अच्छा स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का तो। yeah, actually, when I was in India, I was working as a social media हुँ, for हुँ, Accenture company. Then after that, I moved to UK for like better scope and everything. हुँ, And हुँ। then I joined Portsmouth. So now I'm working on my masters. व्हाट्स Let's योर see. यूनिवर्सिटी? It's University of Portsmouth. पोस्टमाउथ? Portsmouth. Portsmouth. Like it's ओह! actually the pronunciation is Portsmouth. पोस्टमाउथ ओके। Yeah, in UK they have the different pronunciation, yeah. Peterborough, they say Peterborough. Someone Oh, has okay. joined. Some are joining. 6 people are watching. Good. So, apart from this, let's do the questioning session. If you have any concern from my side, you can ask from me as well. Okay, it's Sure, not sure, like sure. I'll, you have to. I have to only ask. So, apart from this, like many of the in my comment section, in the YouTube section,
comment section, they ask like student can do the part time as a care worker or not. So I have told many times in my videos that anyone can do the part time as a care worker, but like the concern. So I believe you are working as a care worker, so you are the better person to explain. So it's like working in a care home. If you haven't worked in India or in your home country, Mm-hmm. so it will be bit tough because the patient whomever you met, they are not kids, so they are Right. like about 70, about 80 age. So it's Right. like holding their legs, holding their hands, and like changing the pad, giving a bath to them, and Mm-hmm. like the uh, जैसे-जैसे उम्र बढ़ते जाती है Right. 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 बोलते हैं ना कि ब्रेन बच्चों जैसा हो जाता है, तो Mm-hmm. दे आर एक्चुअली नॉट द मैच्योर्ड पेशेंट्स। हम पेशेंट्स नहीं बोलते हैं, वी कॉल देम रेसिडेंट। सो दे आर President. नॉट Okay. द मैच्योर्ड रेसिडेंट बट दे आर लाइक अ किडिश, सो यू Mm-hmm. हैव टू मैनेज देम। जैसे हम बच्चे को सँभालते हैं, उन्हें भी हम उसी तरीके से हमें सँभालना है। इफ दे आर गेटिंग एंग्री और इफ दे आर बीटिंग यू, you Mm-hmm. can't beat them back, you can't get angry on them because you're working Oh. at somewhere where you have to keep a lot of patience. So Right. Right. if you're not a kind of person who has lot of patience or something, Mm-hmm. then you won't be able to work in care home. So that's what matters. Oh, great. But how did you switch your career from digital marketing to care home? Like you should search some jobs in your area. Yeah, I did actually. Even I got two offer letters from the Hmm. companies in UK, and Okay. they wanted me to work full time. And as a student, I have You, no rights to right, work right, full right. time. Makes sense. Hmm. So that's the reason I requested them, if you have any part time opportunity, I'll be Hmm. happy to work with you, or else I can try after my course. So they asked me to Okay. try after once I finish my degree. So I said okay, fine. But until that time, I cannot sit at home and I can't focus on only on education, right? So I Makes need sense. to fulfill my needs everyday routine. So for that, I thought to join care home. Before that, I have worked for a subway, but that was like he was giving me a lot of work, so I used to get tired and I had no time to do other things. So that's why I left that and I joined care home. Makes sense. So, for the beginner who wanted to join care home or he who wanted to pursue their career as a care worker, so do they should have prior experience like in UK? Okay, so if you are in UK, if you are a student and if you are joining care home, you Hmm. don't need any prior experience because wherever you join, they will give you training. At least 2 days of training happens, Okay. and after that live training also they give, like some people they ask you to do for 1 week, some Hmm. people ask you to do for 2 days. Because I got 2 days of training, that's like a we Okay. call it shadow Hmm. means like you're working in a live like live care home, Care home. where Okay. a senior carers are working and you're watching Hmm. them for 2 days Right. continuously. You have to do that 2 days, and from Okay. third day you can work on a board, like you get on board, like you will work by yourself, there will be Okay. nobody to help you. Hmm. So it's like 2 दिन का ट्रेनिंग के बाद Hmm. आपको को काम करना स्टार्ट करना है। Okay, मतलब अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्टिल he or she can work in a care Still home. he can join. Like there are Okay. some agencies who charges for training, and some Training. are Okay. like some gives free. So it's like up to the agency. Right, right. So, in that shadow training period, if the person joins, तो वो पेड रहता है ट्रेनिंग और या पेड नहीं रहता या अनपेड रहता है वो? No, the one training you get before you go on a shadow period, हुँ, that's a हुँ। paid one. That's like around 80 pounds आपको ले 80 pounds आपको लगेगा। So वो वाला पेड है, जो वो लोग आपको एक जगह पे बुलाएँगे, जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे बुला हुँ, के हुँ। देते हैं। The other one shadow, you will go in a care home where you will get trained by a senior carers. ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो एनवायरनमेंट कैसा रहता है केयर होम में वर्किंग का? क्योंकि मैंने वर्क किया है बट नॉट एज़ अ केयरर। इन केयर होम आई हैव वर्क्ड एज़ अ किचन असिस्टेंट, नॉट एज़ अ केयरर। सो मैंने देखा है लाइक कि व्हाइल यू आर वर्किंग इन अ केयर होम, किसी भी पोज़ीशन पे हो लाइक आपका केयर वर्कर के साथ या रेज़िडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता ही होता है। लाइक कुछ न कोई Uh, रेज़िडेंट चिल्लाता होता है या कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है, हमेशा शोर और वो तो रहता ही रहता है, मैंने देखा है। व्हाइल आई वाज़ इन द किचन, मैं आई कैन हियर लाइक
there was one lady who continuously like scream Okay. like. Yes, they scream entire night. There are like some resident who cry entire night, Mhm, who just like they just roam around entire night. They don't even sleep. You have mhm, to make sure that they are safe and they are not going anywhere out of care home, and they are not leaving their room. They are sleeping. They are eating on time. They are doing everything like everything on time. This is your responsibility if you are on shift. So I'll be honest with you, because whatever I speak in my video, mhm, I just mhm. speak whatever I have faced You have in my felt correct. journey. Mhm, So it's like the first day when I went to care home, I mhm. got a paralyzed resident who was like Oh. totally paralyzed. Mhm. His leg was like swallowed, and बोलते ना कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। Right, right, right. उसके पूरे दोनों पैर ऐसे सूज गए थे, एंड वो इतना रो रहा था। मेरा पहला दिन था वो शैडो के बाद, Mhm, शैडो हो चुका था मेरा, और mhm, वो mhm. मेरा पहला दिन था लाइव, मतलब मैं शिफ्ट पे थी, प्रॉपर शिफ्ट पे। और मुझे पहले दिन ही 1 टू 1 दिया गया, और वो बंदा Oh. इतना थोड़ा मोटा था और इतना रो रहा था Mhm. अंदर रूम के अंदर, और बार-बार बेड के नीचे गिर रहा था। आप सोचो, मैं 55 केजी की लड़की और वो 80 किलो का बंदा, मैं कैसे उठाऊँगी? Makes तो sense, makes अगर sense. मैं अगर ये वीडियो में बोलती हूँ तो लोगों को लगता है, कुछ लोग कमेंट करते हैं लाइक वी आल्सो वर्क इन केयर होम, वी डोंट हैव दिस प्रॉब्लम, यू आर लाइंग एंड एवरीथिंग। आई हैव अटेंडेड दिस थिंग, आई हैव Mhm, एक्सपीरियंस दिस mhm, थिंग। mhm, लाइक कैसे हुआ था उस दिन, वो रो रहा, और मैं लिटरली पूरे रूम में, कैसा होता है लाइट रात भर बंद रखनी होती है आपको, mhm, आप mhm, लाइट ऑन रख नहीं सकते। और कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं जो बोलते हैं कि टीवी देख सकते हो, आप टीवी देखते बैठ mhm. जाओ। और कुछ रेज़िडेंट ऐसे होते हैं कि टीवी भी अलाउ नहीं करते हैं। बोलते हैं कि Right, right. रेज़िडेंट को डिस्टर्ब होता है, तो आप टीवी मत देखो, जस्ट स्विच Mhm, ऑफ टीवी एंड सिट डाउन इन द कॉर्नर। तो बेड है, आपका एक चेयर रहेगा, आपको चेयर पे रात भर बैठना है। और बोलते हैं ना, वो मैं लिटरली पहली बार मैं बहुत डर गई थी, लिटरली मैं रोने Oh. वाली थी। वो रात भर इतना चिल्ला रहा था, बिकॉज़ आई Mhm. नेवर हैड एनी एक्सपीरियंस दिस काइंड Makes ऑफ sense, दैट। makes sense. मैंने हॉस्पिटल में जॉब किया था, बट Mhm. नॉट दिस काइंड ऑफ जॉब लाइक एवर आई हैव ओह! डन। ओके। और वैसे भी जो आप वीडियोज़ बनाते हो या हम लोग जो वीडियोज़ बनाते हैं दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस लाइक हम किसी को किसी अदर एक्सपीरियंस नहीं हुआ सो व्हाट वी कैन डू मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है दैट ओनली आई कैन शेयर राइट? सो आपके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था आपने वही शेयर किया सो इट्स ओके लाइक पीपल आर देयर टू कमेंट नेगेटिव दैट्स फाइन No, टोटली it's फाइन। like I'm telling them about my experience. Like there are so हुँ, many care homes. डिपेंड करता है कि कुछ केयर होम्स में इंडिपेंडेंट भी होते हैं रेसिडेंट, जो हुँ, खुद हुँ, का काम खुद करते हैं। हमें सिर्फ उन पे नज़र रखना होता है। दैट्स लाइक इट्स दैट विल बी लाइक वेरी गुड काइंड ऑफ जॉब, लाइक यू एनीवन कैन डू दैट। But हुँ। staying with a paralyzed patient an entire night, he's screaming, and you have to make them, calm, and you have to make them silence. That's not a easy job. It's like a very tough. I can understand. So what sort of a salary care workers can get, like from if they are working through the agency or directly with the care home? What So sort there of a are salary? like types of agencies. Some Mhm, agencies gives for 13 to 14 pounds. I do okay. have friends who Mhm, take 13 to 14 pounds hourly, mhm, and where I work, I get 10 pounds hourly. तो इट्स okay. लाइक मेरी 12 घंटे की जॉब होती है, बट Mhm, उसमें से जो वीकली हमारा जो 20 आवर्स का टारगेट होता है, उसके mhm, हिसाब से अगर 2 शिफ्ट करती हूँ, तो मुझे 20 घंटे की सैलरी मिलती है। बाकी जो एक्स्ट्रा 1 आवर मेरा बच जाता है, 12 घंटे में से 1 घंटा ब्रेक होता है, mhm, तो mhm. ब्रेक का दे डोंट पे। सो Oh, इट्स okay. लाइक विदाउट ब्रेक, सो Mhm, हम लोग को ब्रेक का कट करके देते हैं। सो mhm, 11 आवर्स में मैं अगर 2 दिन का करती हूँ तो 22 होता है। तो mhm, उसमें से 20 आवर्स का दे पे टू मी, एंड द 2 आवर्स का वो लोग रखते हैं। mhm. एंड कई बार ऐसा हुआ है कि दे से दैट वी विल कैलकुलेट इन द एंड ऑफ द मंथ, बट दे नेवर डू दैट अंटिल एंड Okay. अनलेस आई आस्क देम टू डू। और वो भी पूछूँगी तो उसको भी बहुत डिले करते हैं। अगर Mhm, केयरो mhm, में जॉब करते हैं तो उसका अमाउंट का कैलकुलेशन नहीं रहता है प्रॉपर्ली। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। mhm. So you're working with the agency or directly with the care home? नो, आई एम गोइंग थ्रू एजेंसी। So they do provide the transport or the like transport fare or यस, anything? यस, दे डू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट, बट फॉर दैट आल्सो दे चार्ज 10 पाउंड्स, लाइक 5 गोइंग, 5 कमिंग। इट्स लाइक 2 साइड। Okay, two side 5 pound. Okay, that is fine. Like I believe if they are providing transportation, it's better because going from our own it's so difficult, and you know the expense of the travel. It's so expensive in the UK.
So another thing I wanted to know, like, how do you feel working in a care home? Because it's so difficult, I know. See, maybe I talk in my videos about like a very bad thing about my care home job, but when I'm on shift, I give my 100% because of me, I don't want someone to get harmed. सो मेरी Makes वजह sense. से किसी को चोट नहीं Makes sense. पहुँचनी Right, चाहिए, right, किसी right. को हार्म नहीं होना चाहिए। सो वो मैं मेक श्योर करती हूँ और मैं जो यूट्यूब पे बोलती हूँ वो रियलिटी में बताती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ है। तो मैं इस किसी को ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप केरम जॉइन मत करो या फिर केरम जॉइन करो। इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू वर्क यू कैन जॉइन, गेट अ Okay. एक्सपीरियंस। दिस इज़ आल्सो Mhm. वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ये इम्पोर्टेंट है ऐसा एक्सपीरियंस होना बिकॉज़ कहते हैं ना केरोम ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कुछ लोग बहुत रिचुअल वे में चले जाते हैं कि मुझे बड़ों की सेवा करने का मौका Mhm. मिलता है। Mhm. तो मैं लाइक मेरे को लगता है मेरे माँ-बाप हैं जिनकी मुझे सेवा करनी चाहिए। Mhm. मैं उनका छोड़ के मैं दूसरे माँ-बाप का कर रही हूँ वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट Mhm. कभी-कभी मेरे सामने ऐसा भी हुआ है कि मैं एक रूम में बैठी हूँ और मेरे बाजू वाले रूम में पेशेंट मर गया है सुबह उठने तक। तो दैट Oh. इंसिडेंट हैज़ हैपेंड टू मी एंड आई वाज़ लाइक पूरी रात वो बंदी ज़िंदा थी और सुबह 7 बजे वो लाइक लिटरली शी डेड एंड आई एम लाइक व्हाट द फक। लाइक सुबह उठने के बाद Mhm. और Mhm. मैं बाजू वाली के रूम से उसका हो गया तो मैं उसे वॉश देने जा रहे थे हम लोग, मैं और एक सीनियर केयरर एंड लिटरली देखा तो वो मर चुकी थी। तो इट्स लाइक Oh, बोलते हैं ना काम कर रहे हो बट यू हैव टू बी हैव दैट रॉक हार्ट। एकदम Mm. कड़क दिल होना ज़रूरी है बिकॉज़ इफ यू आर लाइक अ वेरी इमोशनल पर्सन और एनीथिंग देन इट्स गोना बी हार्ड फॉर यू टू स्टे इन केयर होम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेक सेंस, मेक सेंस। मतलब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा ठीक है। अच्छा, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस केयर ना, मैं आपको मतलब पूछना चाहूँगा कि किस इंटेक से हो आप? व्हाट्स योर इंटेक? सितंबर 2022। September 2022. Okay. How was your immigration experience? Okay, so If you remember. I have come from Mumbai airport. So Mhm. I'm from basically I born and grown up in Mumbai. Mhm. My parents are we belong to Hyderabad like Telangana South. Mhm. सो मैं मुंबई से आई हूँ और मुंबई से मेरा नॉर्मली वहाँ पे हो गया था जल्दी से सब कुछ। जब भी मैं उतरी हेथरो पे तो इट हार्डली लाइक टूक 1 आवर टू Oh. गेट आउट ऑफ द Mhm. एयरपोर्ट लाइक क्योंकि मैं रात को 10 बजे कुछ उतरी थी। Okay. तो इन द सेंस इवनिंग टाइम यू नो दैट कि बहुत क्राउड ज़्यादा होता है रश होता है, ओके। एंड लाइक और हम लोग वैसे भी कैसे 12 तारीख को हमारा सितंबर 12 सितंबर को हमारा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ था लेक्चर्स Mhm. एंड आई अराइव्ड बाय 16। सो इट्स Okay. लाइक मैं थोड़ी लेट थी 3-4 दिन बट Mhm. स्टिल देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वर कमिंग एंड उसकी वजह से 1 आवर 1 एंड हाफ आवर कुछ हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस चला एंड राइट, इट राइट। वाज वेरी स्मूथ दे डिडंट आस्क एनीथिंग दे डिडंट डू एनीथिंग इट्स लाइक इट वाज वेरी स्मूथ एंड वेरी गुड। ओके, लाइक किस टाइप का क्वेश्चन्स उन्होंने पूछा था? इफ यू रिमेंबर लाइक 1 और 2 और 3? Okay, I do remember, like, हुँ, they हुँ, only हुँ। asked me, like, where you're studying. So I हुँ। said, University of Portsmouth, what you're studying? Master's in digital marketing. That's it. They didn't ask me anything. Okay, because I have seen many videos, or like most of the students are so concerned what kind of the questions they ask at the time of immigration. So, like I tell them, I try to guide them in my videos as well. Like you don't have to worry, just be clear and read the cash letter carefully, whatever it is written, like your course start date, when it is going to finish, what's your university, where you going to stay, your accommodation, your university campus, because some universities having the different campuses. So make sure you are having that ability to know what kind of the campus you have been allocated, right? So these kind of the like basic general question you should have keep in mind, because they can ask any random question, and if they get doubt like this person is not genuine, then they're going to like strictly ask some more other questions. So make sure like you should remember everything written on the cash letter, how much you got the So, scholarship as well. So yeah. you got any scholarship? Yeah, I got like a 1,500 pound scholarship. 1500 only? Okay, how much is your fees then? It's like 17,000 pounds. 17,000 pounds.
Then you got very less scholarship, because at least 3,000 to 5,000 is the minimum scholarship you student Yeah, can get. now like I have checked on the website. They say that it's depend on your like the Hmm. marks and everything, how much you have obtained in your previous education. So depend on based on that they give you scholarship. So I said like Okay. it should be equal to every international student, but Mm. it's not. One No, of my mhm. Sorry, go one ahead. of my friend, Mhm. she had paid like one lump sum payment to the university fees, so Mhm. she got like 2,000, I guess, 2 or 2,500 scholarship. Okay, because because I am a University of Essex student, so most of my friends and have got like 5,000, 3,000 to 5,000 scholarship, and obviously I have also got the 3,000 scholarship. So most of them have got 3 to 5,000 scholarship. If they have at least 60% and above of that, they will get easily 3,000. And if you have like more than 70 to 80 or 90, then you will get at least 50%. Oh, sorry, 5,000. Even my friend is there, like Anirudh. He is in Sussex University, so he also has got like 5,000 of scholarship, I Mm, guess. mm, mm. That's the He's in thing. So, so how is he your experience in a student as a student in UK? So to be honest, like the assignments and everything, I Mm, never had done in India. So mm, after coming here, I realized that like a practical education bhi hota hai, and mm, this is way better than the one I learned in India. It's like in India we learn all the theoretical and the reading and everything, but mm, here it's like everything you do by practical. You have to write assignment, and one thing, like when it comes to education, like digital marketing topic, mm. whatever I expected, they are not teaching that. Instead of Oh. that, they are teaching like everything. I am like confused, like why I invested my 15.5 pounds, like 1,000 pounds, Mm-hmm. just to like come and like do the assignments and everything. So that's like a secondary part. At least I arrived here. That's a very big thing because Yeah, people are that's like certain. dreaming. Some people have a dream to come UK, and like Mm. I guess I'm the one of them, and I achieved it. It's a very big thing for me. Covering fees is not a big deal here, I guess. I guess yes. If you get the good job later on after your study or after your graduation, then I believe it will be the best option or best choice or the best decision you have made. You have any questions from me? So it's like you have come for a September intake or what? Like which intake? I came here in Jan 22, so my intake is Jan 22, So and it's my already course is finished. almost finished. Yes, and we have received marks as well, and I got the merit in my graduation. And I have done MSc in Applied Data Science, Masters in Applied Data Science So from it's University of Essex, not Sussex, Essex. Essex. Hmm. Okay. My friend is there. He's Essex or Sussex. There is one more university, Sussex. Sussex is there as well. Yes. Okay, you are into Essex. Okay, Mhm. so it's like, what your thoughts on like getting a job? Like, do you think there are a lot of people who are whom I met in Carom, and after their Mhm. degree they are still in Carom just because of the sponsorship? So, what's your views on this? Like, do you think we'll get a job after that? Like once we complete the course, because you're See, senior. till now, because February we have got our results. So from January, I have started looking for the job. I have started applying for the job because, and the market, the UK market is seriously like depends on the experience, skills, and luck along with it. But I would say keep learning and keep developing some more skills because you never know what kind of the skills you will get, what kind of the skills जो आपको job वगैरह में help कर दे. अभी क्या हो रहा है ना, सीन once you will apply for some job, and suppose some recruitment agency is interested in your CV, so they will give you the call. Once they will call you and discuss the things, and later on if they discuss your visa status, and they hardly come to know like you are on a student visa going to apply for the graduate visa, so like similar kind of the experience that they won't be interested in your profile later on once they will come to know that you are on a student visa or the PSW. So उनको एक्चुअल में चाहिए इस तरीके के लोग जो या तो ILR पे है, या PR है, या ब्रिटिश सिटीजन है।
मतलब उनको कोई हेडेक ही नहीं चाहिए, जो 2 साल के वीज़ा पे है या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे है। दिस इज़ द रियलिटी और माय एक्सपीरियंस टिल नाउ। लेटर ऑन जो मेरा एक्सपीरियंस होगा पीएसडब्ल्यू पे मैंने क्योंकि अभी अप्लाई नहीं किया बट मेबी आई एम एक्सपेक्टिंग टू अप्लाई इन मार्च और लेटर ऑन मार्च। तो अभी तक का एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ज़्यादा बेकार रहा है क्योंकि जितनी भी एजेंसीज़ या रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ कॉल करती है, नॉट लाइक अ केयर वर्कर जॉब वगैरह के लिए, प्रोफेशनल जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस है लाइक जैसे ही उनको पता लगता है दैट यू आर ऑन अ पीएसडब्ल्यू 2 साल के बाद क्या होगा, वी आर नॉट गोइंग टू स्पॉन्सर। ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो स्पॉन्सर भी करती हैं डायरेक्टली और सब कुछ में हेल्प करती हैं। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा बट मैंने काफ़ी सारे लोगों की वीडियोज़ भी देखी हैं, जिनको डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप मिलती है प्रोफेशनल जॉब्स में भी। तो अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा तो वो डेफिनिटली आई विल शेयर बट अभी तक तो बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा है। लाइक कॉल्स वगैरह अ, बहुत कम आती है, बहुत ही कम आती है। लाइक अगर आप 100-200 जॉब्स के लिए अप्लाई करो तो हार्डली 1 से 2 मेरे एक्सपीरियंस में। Yeah, you're right. Like till now, whomever I have met, like after coming here, who are international students, हुँ, they हुँ। all are saying the one thing. Like till now, we had very bad experience in UK. There is no positive thing to say. It's just that the infrastructure is good and everywhere white people are there. But that one like a free lifestyle thing, freedom is not get. We are not getting that kind of lifestyle. Like एक freedom life होती है हुँ, हुँ, जहाँ पे हुँ, इंडिया में हम लाइक हमारे होम कंट्री में हम कैसे रहते थे, हुँ, वी यूज्ड टू बी लाइक ऑन ओवन टर्म्स एंड हुँ, एवरीथिंग। यहाँ पे हर चीज़ में एक पॉलिसी है, हर जगह एक पॉलिसी फॉलो करना पड़ता है हुँ, हुँ। और कुछ गारंटी नहीं है कल क्या हो सकता है। ये तो तो इट्स है। लाइक हर हर दिन एक खतरा है, हर दिन एक खतरा है यहाँ। अनसर्टेनिटी बनी हुई है हमेशा। ओके। सो ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना है एंड सेम लाइक व्हेन इट कम्स टू माय एक्सपीरियंस टिल नाउ लाइक अभी देखते हैं आई हैव लाइक सम कंपनीज टू हुँ, लाइक हुँ। अप्रोच सो लेट्स सी अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली सम someday I'll upload on YouTube and everything. How is your university experience? Is Portsmouth or Portsmouth? How should I tell? Like how should I pronounce? Portsmouth. It's Portsmouth. Okay, Portsmouth. Uh, How is your experience with it? in Portsmouth, it's like I in first semester I hardly had like 4 classes, 4-day Mhm. classes in a week. Was it face to Then face? yes, that's like a physical. Okay. Mhm. So it's like 4 days classes, and I didn't attend any online classes because we didn't had any online classes. Okay, great. हमारे कोई ऑनलाइन क्लासेस Mhm, थे ही mhm, नहीं। mhm. तो एवरीथिंग वाज़ लाइक ऑफलाइन। तो मैं कॉलेज के नियर बाय रहती हूँ, तो मेरे लिए Mhm. कोई बड़ी बात नहीं कॉलेज जाना। तो Okay. सो 4 दिन क्लासेस होते हैं, 3 दिन Mhm. मैं फ्री रहती हूँ। तो का 4 दिन में कैसा होता है लाइक एवरीडे 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स ऐसे क्लासेस होते हैं। एंड Okay. समटाइम्स इट्स लाइक 1 आवर क्लास भी हो सकता है। देन Mhm. आफ्टर दैट यू जस्ट गो बैक टू लाइब्रेरी एंड स्टार्ट working on your assignment and everything. So it's like I just feel like is it if you are international, it is mandatory to fail in at least 2 subjects. It's is it how it works? I'm like, what? So it's like in my class, everyone like every international student has failed in at least 1 or 2 subjects. It's like That's कंपल्सरी mandatory. है ये। इट्स मैंडेटरी यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट तुम्हें फेल होना ज़रूरी है। अभी मतलब मैं भी हुई हूँ, ऐसा नहीं मैं कोई ग्रेट नहीं हूँ, बट मैं भी Mhm. फेल हुई हूँ 1-2 में। सो बट द गुड थिंग इज़ वी हैव सेकंड चांस। हाँ, यहाँ पे रीसीट का चांस मिलता है क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैं भी एक कोर्स में फ़ेल हुआ था, एक मॉड्यूल में फ़ेल हुआ था। तो लेटर ऑन मेरे को भी रीसीट मिला था और ऐसा था कि मॉड्यूल जो है डिवाइड होता है पार्ट्स में कुछ 40-60 ऐसे इस टाइप में डिवाइडेड होता है। तो जो मेरा यस। एक्सपीरियंस था कि मैं 30% में फ़ेल हुआ था, अदर में नहीं हुआ था। तो मैंने उसी को रीसीट किया था और उसमें मेरे को चार्ज भी नहीं देना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे रीसीट के लिए 50 पाउंड्स देना पड़ता है। आपका यूनिवर्सिटी में सेम रूल है क्या? हमें तो रीसेट अभी मतलब एक एक बार जो फेल हो गए सेकंड चांस तो मिलेगा। हाँ, अब उसके बाद अगर वापस रीसेट आएगा शायद, उसके बाद का जो होगा रीसेट होगा वो। So I don't ओके। know. I'm like I have not experienced anything till now. So अभी जो experience होगा definitely I'll film on that because ओके। I really want to know people क्योंकि जब आप आपके assignment में plagiarism कुछ आता है हुँ, हुँ। तो it's not the short process, it's very long process. They हुँ, हुँ। take a time, they do video calls, they do Zoom calls and they ask you and they record that video, everything they do here. सो मेरे साथ हाँ, ये सब हुआ है। तो इट्स करेक्ट, लाइक करेक्ट, करेक्ट। एवरीथिंग इज़
everything is pending to make film it and upload on Google, YouTube. So I'll make it. I'm just trying to get some good devices because this is like a worst device I have ever had. My laptop doesn't have clarity, and people are like always call me sleeping Didi. So it's like obviously working in a care room that definitely makes you sleepy. So it's ओके, आप fine. Like नाइट शिफ्ट करते हो कि डे शिफ्ट करते हो? uh, मोस्टली आई प्रिफर नाइट शिफ्ट बिकॉज डे में मेरे क्लासेस होते हैं हुँ, एंड अगर मेरा कुछ और प्लान है तो मैं एटलीस्ट डे में कर सकती हूँ नाइट में आई कांट डू एनीथिंग सो इट्स लाइक आई गो फॉर नाइट शिफ्ट ओनली सो ये कुछ आपका सजेशन रहेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, सो जो अपकमिंग है फॉर सितंबर इनटेक और अक्टूबर इनटेक या मई इनटेक के लिए? तो मैं तो वही बोलना चाहूँगी अगर आपको प्रायर एक्सपीरियंस कुछ है काम का, अगर आपने हुँ, कभी हुँ, जॉब किया है, हुँ, हुँ, तो इट्स वेल एंड गुड फॉर यू बिकॉज़ इट विल बी ईज़ी फॉर यू टू गेट अ जॉब. हुँ, If you हुँ, don't have any experience, if हुँ, you are हुँ, a fresher, like after graduation you are moving UK, then I would suggest just go for any job first. At least आप 6-7 महीने एक काम करो कोई, हुँ, काम हुँ, करके आप के मूव हो जाओ. एंड ओके, self do things by self, don't be राइट, depend on someone because I met some हुँ, हुँ, students who are just have arrived in January and they are like they have just finished their graduation हुँ, and हुँ, they moved to UK and now they are crying here. So it's like it is really tough for them to survive. So उनको कुछ खाना बनाना नहीं आता है, ना राइट, राइट, कुछ राइट, आता है एंड दे आर लाइक उनको लगता है हमें इंडिया में बैठ के यूके बहुत अच्छा लगता है। हुँ, 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 वीडियोज़ में यूके बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन रियल स्टोरी नोबडी विल टेल यू। सो दैट्स व्हाट द थिंग अबाउट द यूके लाइफस्टाइल लाइक नोबडी विल टेल यू द रियल एंड honest story, but here some people like me whenever we tell we get those kind of comments. So it's like oh, that's fine but at least I just want people to know if you are expecting something good from हुँ, हुँ, UK हुँ, 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 then be prepared to face lot of issues at least 2 साल के लिए ऐसे सोच के आ जाओ कि स्ट्रगल है for मेक्स next 2 सेंस। years you have struggle. Don't think that मैं जाते ही 1-2 महीने में मेरा आईफोन आ जाएगा मेरा हुँ, हुँ, मैकबुक आ हुँ, जाएगा. It's not हुँ। gonna happen guys. Just honest review. थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्ट ओपिनियन। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, लाइक हाउ एक्सपेंसिव इज़ यूके? लाइक हाउ टू मैनेज देयर लिविंग एक्सपेंस साइड बाय साइड यूनिवर्सिटी फीस? इज़ दैट पॉसिबल? हाउ डू यू मैनेज योर लिविंग एक्सपेंस एंड To यूनिवर्सिटी be फीस एंड honest, the rent I'm paying here, हुँ, हुँ, this was my monthly salary in India. So it's like I'm paying 55,000 every month, the rent. ओके, And अप्रॉक्स 550। 550 and my salary was 60,000 हुँ, हुँ, in इन इंडिया। back in my country. हुँ, हुँ, And यहाँ पे आने के बाद right now the care home shifts I'm not getting at all like हुँ, हुँ, 10 दिन में एक शिफ्ट मुझे मिल रही है ओह! और वो भी मैं मिस नहीं कर सकती हुँ, because हुँ, at the time there are care homes who have hired permanent staff and they हाँ, don't need any yes they don't एजेंसी need स्टाफ। agency staff. So that's a big reason for carers who are going through agencies. हुँ, हुँ, They are not getting shifts, and this is like a very tough at that time to get shifts. हुँ, हुँ, And at that time, you have to have a backup from your home country or like from or any other job. हुँ, हुँ, Just keep a backup for this because आपको एक जगह से सैलरी नहीं आ रही है तो दूसरी जगह से आपको लाना ही पड़ेगा। करेक्ट, अगर आपके करेक्ट, पास करेक्ट। कोई ऑप्शन नहीं है या तो आपको हुँ, मॉम-डैड से मँगाना पड़ेगा आपके कंट्री से। तो कंट्रीज़। अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि लाइक एटलीस्ट मेरा रेंट निकल रहा है बस इतना ही हुँ, मैं हुँ, कर पा रही हूँ एंड व्हाटएवर एक्सपेंसेस आई एम स्पेंडिंग लाइक फूड एंड एवरीथिंग दैट हुँ, इज़ हुँ, लाइक आई डू हैव आई एम आस्किंग माय पेरेंट्स टू सेंड मी डू दैट, डू दिस सो इट्स लाइक दैट। हुँ, आई हैव मनी विथ मी सो वैसा चल रहा है। बट स्टिल इट्स नॉट द वे द गाइज़ थिंक बैक इन कंट्री लाइक जाके रहूँगा ती 20-30 हज़ार में घर मिल जाएगा। No, हुँ, हुँ। this is going to be more expensive in upcoming years. This is not gonna stay same. So अभी तो कम है लेकिन अब आने वाले सालों में और भी रेंट बढ़ने वाला है हर जगह पे। मेक सेंस। अभी यूके में क्योंकि इन्फ्लेशन जो है टोटली हाई पे है, लाइक लास्ट 10 इयर्स का देखा जाए तो, और ग्रोसरी का जी। रेट्स तो आपको पता ही है, ट्रैवल का भी पता ही है कितना ज़्यादा है, और मार्च के बाद लेटर ऑन लाइक और भी ज़्यादा ट्रैवल एक्सपेंसिव होने वाला है। लाइक अभी न्यूज़ आई थी।
रिसेंटली आई विज़िट कल ही मैं आज़रा जाके आई अ हुँ, डे इन माय लाइफ वीडियो बना रही थी मैं। तो हुँ, आज़रा में गई मैंने देखा ग्रोसरी रेट्स जो लास्ट मंथ मैंने ग्रोसरी प्राइसेज़ देखे थे हुँ, हुँ। और ये मंथ देखे थे सब पे 30 पेंस, 40 पेंस, 50 पेंस ओह! इंक्रीज़ हुआ है। हुँ, हुँ, On हुँ, every हुँ। grocery I what I do whenever I check the price I just click a photo क्योंकि मुझे मतलब टेस्को और मैं आज़दा से कंपेयर करती हूँ हुँ, हुँ, because हुँ, both हुँ। are near to me I can go easily to anywhere so it's ओके, like मैं कंपेयर करके देखती हूँ तो मुझे लाइक आज़दा एंड ग्रोसरी में कुछ डिफरेंस नहीं लगा इवन आज़दा एंड टेस्को में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नाउ टेस्को हैज़ बिकम मोर चीपर देन आज़दा सो इट्स लाइक राइट। टेस्को बहुत ऑफर्स रखता है बट हुँ, आज़दा हुँ। नहीं रखता उतने ऑफर्स। सो मेक इट्स सेंस, बेटर मेक टू सेंस। विज़िट टेस्को टेस्को, ओके। हाँ, टेस्को पे काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाती है आपको प्रोडक्ट्स की और आज एंड तक हुँ, हुँ, they do have club card option but क्लब Asda कार्ड they don't have that and they have some points or something kind of. ओके। So it's like that's really hectic for students to हुँ, हुँ। get a groceries and everything. अच्छा अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस टिल 4-5 मंथ्स जितना भी आपको हुआ है, स्टूडेंट्स आस्क मी मोस्ट ऑफ द टाइम दैट क्या वो यूनिवर्सिटी की फीस ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ पार्ट टाइम करके या कुछ भी और जॉब करके दे आर एबल टू पे देयर यूनिवर्सिटी फीस? यस, डेफ़िनेटली वो कर सकते हैं फ़ीस पे। हुँ, हुँ। अगर आपकी जॉब फ़िक्स है, अगर आपको मंथली अगर आपका 1000 पाउंड्स कहीं न कहीं से निकल रहा है, तो ओके, आप ईज़िली आप अपना फ़ीस पे कर सकते हो। क्योंकि बीच में 2 वेकेशंस आते हैं, एक क्रिसमस आता है और एक ईस्टर आता है। हाँ। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट माय इनटेक पीपल क्योंकि अगर जो जनवरी आए रहेंगे, उनको समर आएगा और ईस्टर आएगा। हुँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्रिसमस मिलेगा, तो लाइक दे विल गेट 3 वेकेशंस। सो राइट। इट्स तो उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा है। ये वेकेशन में आप फुल टाइम जॉब करते हो और ये यहाँ हुँ, पे हुँ। आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। बट कब? जब आपकी जॉब फिक्स है तो। ओके। अगर जैसे हमारा ही अभी मुझे ही आके 5 महीने हो गए, हुँ, मैंने हुँ। सिर्फ पहले महीने में अच्छी खासी इनकम की थी, हुँ, हुँ। अराउंड 1000 एंड उसके बाद मैंने अभी तक 1000 में पहुँची भी नहीं हूँ। लाइक एवरी मंथ आई एम ओह! लाइक स्टॉपिंग ऑन 500 पाउंड्स, 400 पाउंड्स दैट्स इट। आई एम नॉट ओके। क्रॉसिंग एट ऑल। So it's like you can pay your fees if you have a fixed job here. Otherwise, don't हुँ, expect anything like this that you will मेक pay सेंस, your मेक fees सेंस। to. तो आपने पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूँढा था? हाउ डिड यू फाइंड द पार्ट टाइम जॉब? So there are like when it comes to care home, like there are हुँ, so many jobs available on Indeed. So ओके। मैंने क्या किया मैं Indeed पे गई इंडीड पे जाके मैंने सर्च किया हुँ, हुँ। और मैंने लोगों से पूछा कि एजेंसीज़ के नाम क्या है? कैसे हुँ, है? हुँ, 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 यहाँ पे का केयर होम कैसे होता है? बहुत लोग केयर होम में थे। तो मैंने 2-3 फ्रेंड से रेफरेंस भी लेके अप्लाई किया बट आई डिडन्ट गेट द जॉब। हुँ, सो हुँ, इंडीड से मुझे मिला है और काफ़ी लोगों को मिला है इंडीड से। सो दैट्स व्हाई आई एडवाइस पीपल जस्ट गो फॉर इंडीड यू विल गेट इट इफ यू हैव दैट स्किल। Main ओके। thing, what care home looks, they want that person to be here in UK. If you're sitting in ओह! a ओके। back country and if you're हुँ, हुँ। applying that's not gonna work. Oh, that means overseas people they don't hire. Most of their preference is to be in the UK. Okay, makes sense, makes sense because they are easy to commute in that care home. That's true. And And like overseas they if they are in India and like everything, visa car, sponsorship, everything, hmm, that's like an extra expense. Nobody make want to spend money. correct, correct. अच्छा केयर होम में मैंने सुना है कि like students can easily switch their visa like student visa to tier 4 sorry tier Yeah, 2 tier 2 Mhm. कर सकते हैं बट कैसा होता है आपको वैसा परफॉर्मेंस भी करना है। ऐसा नहीं कि आप जॉब कर रहे हो अभी चलो इंडीड पे बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे Mhm. केयर होम के जॉब्स है जहाँ पे परमानेंट स्टाफ चाहिए उनको। Okay. तो आपको अप्लाई करना है। आपका एक्सपीरियंस कितने महीने का है? मेरा अभी 5 महीना मुझे 5 महीने हो चुके हैं, मैं Mhm. केयर होम में जॉब कर रही हूँ। सो दे विल आस्क क्वेश्चन्स रिलेटेड टू द ट्रेनिंग व्हिच आई हैव अटेंडेड। बिफोर आई Okay. जॉइन केयर होम। सो Mhm. इट्स Mhm. लाइक मैंने क्या-क्या केयर होम में किया और मेरा कम्युनिकेशन कैसा है बिकॉज़ हियर द इंग्लिश इज़ मस्ट। इफ English यू is कांट must. Okay. कम्युनिकेट इन इंग्लिश देन यू वोंट बी एबल टू वर्क इन केयर होम। सो इट्स लाइक Okay. वो हर चीज़ का वो देखते हैं। फिर बाद में इफ दे थिंक दैट यू आर गुड इन वर्किंग एंड एवरीथिंग देन मे बी Mhm. दे विल हायर बिकॉज़ आई हैव नॉट ट्राइड माय फ्रेंड्स दे आर इन केयर होम एंड दे आर ऑन अ स्पॉन्सरशिप राइट नाउ। और कैसे Oh. कभी आप केयर होम में काम कर रहे हो, इट्स डिपेंड ऑन लाइक योर केयर होम लाइक
If they Mhm. have opening, and if you are working in that care home, you can Mhm. approach your senior that I'm Mhm. looking for a sponsorship. So maybe they can hire you for a permanent role. Okay, makes sense, makes sense, makes sense. But like you should be able to do the hard work and all. Then they will Yes. able At to. least they have to, at least they have to know that yeah, this person is very hardworking, और मैंने देखा है इसको काम करते हुए, so I can Mhm. easily hire. Because जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि आपने कैसा काम किया है, कैसा नहीं, आप सही उनके सही। सामने हो, आप काम हम्म। कर रहे हो, तो it will be more easy for them to hire you. मेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस। अच्छा, चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, लाइक लाइव स्ट्रीम को। इफ यू Yeah. हैव एनी कंसर्न फ्रॉम मी यू कैन आस्क, और अदरवाइज वी कैन एंड दिस No, लाइव स्ट्रीम। see, if you come to Portsmouth, just meet me. That's it. या 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 We'll have डेफिनेटली a डेफिनेटली। video. We'll make a video. हाउ इज द एरिया लाइक पोस्टमेट, इज इट? Portsmouth is island. It's not a ओके, city. So it's राइट। like it's loaded with the water like all around. चारों तरफ पानी है, तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है, हवा ज़्यादा बहती है हमेशा। ओके इट्स ओके। लाइक विंडी एरिया, हमेशा हवा रहती है। हम्म। और एरिया इट्स लाइक फाइन। यहाँ पे ब्रिटिश हम लोग अभी जनवरी इनटेक से पहले तो ब्रिटिश दिख रहे थे मुझे। ओके। अभी ब्रिटिश अभी सारे कम इंडियन दिख रहे हैं, अभी एशियंस। इंडियन ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके ओके। सो Yeah. So it's like nice, like everything. मैं जहाँ रहती हूँ, everything is near to me. Shopping center, like grocery store, everything is near to me. मैंने So सुना था good for पोस्टमेट me. बहुत छोटा सा एरिया है, और लंदन से कितना दूर है ये? लंदन से टू एंड हाफ, like ओके। minimum 2 hours. ठीक है, नॉट दैट बैड। फिर भी लाइक कवर हो सकता है, इतना बुरा नहीं है। So like how far is your place from London? लाइक माय यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ड इन कोलचेस्टर इटसेल्फ, सो लाइक ऑलमोस्ट 1 आवर का जर्नी है, one और hour. यहाँ से Okay, then डायरेक्ट ट्रेन भी है। you're staying और near to. Even I do have direct train from हुँ, Portsmouth to London. बिकॉज़ इन क्रिसमस वेकेशन आई हैव बीन टू लंदन, सो मुझे ओके। मैं डायरेक्ट ट्रेन से जाके ट्रेन से आई हूँ। सो हैव यू बीन टू लंदन एनी टाइम? लाइक 2-3 टाइम्स। ओह! नज़दीक नज़दीक रहते तो लोग हर हफ्ते जाते हैं। हाँ, हाँ, और जो लंदन साइड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए तो लाइक लंदन इज़ अ होम, तब तक ये जितने टाइम यूनिवर्सिटी है उनको लोग तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है कम्यूट करना या टावर ब्रिज पे आई जाना, ये सब तो बहुत ईज़ी होता है उन लोगों के लिए। आई फील इज़ लंदन इज़ मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर सिटीज़, लाइक लंदन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, रहने के और करेक्ट। रेंट के इसमें। तो इट्स लाइक इफ यू गेट अ जॉब देन इट यू हैव टू गेट बेटर सैलरी इन लंदन। हाँ, बट लाइक अगर जैसे सपोज़ करो हमें कम्यूट में इतना पैसा देना पड़ेगा, ट्रैवल में इतना पैसा देना पड़ेगा, वहाँ पे अगर हम रेंट हाई पे कर रहे हैं और हमें ट्रैवल में कम पे करना पड़ रहा है, तो मेरे ख़्याल से इट्स जस्ट माय ओपिनियन, वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, लाइक 90-20 का फ़र्क रहता है, इतना ज़्यादा वो नहीं रहता। जितना आप पे नहीं कर रहे हो ना, अ, थोड़ा-सा दूर जि में आपको उतना मिल जाएगा, लाइक ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, लंदन में तो है, एक्सपेंसिव तो है, नो डाउट। या थोड़ा बहुत लगता है, अगर वही जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे जॉब मिल जाए तो देन इट विल बी वो मोर तो ईज़ी फॉर बहुत मी। अच्छा होगा। सबके लिए बेस्ट विशेज़ है, सबको अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाए और आपका भी करियर अच्छा रहे, आपको भी जॉब मिल जाए। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको कोई कंसर्न हो तो। नहीं, दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड येस आई वॉच योर वीडियोज़। थैंक यू सो मच राजेश्वरी, लाइक मुझे भी लॉट अच्छा ऑफ लगा कि लाइक आप अपना लॉट ऑफ ऑनेस्ट आइडियाज़ ओपिनियन आई देते गेट हो। फ्रॉम योर वीडियोज़, क्योंकि कैसा होता है कुछ नॉलेज आपके पास है जो मेरे पास नहीं है, तो मुझे मेक वो सेंस। पता चलता है कि हाँ, किस पे बना रहे हैं, किस पे नहीं। हुँ, तो हुँ। क्या चीज़ ये ऐसा है, वैसा है। तो लाइक आई डू थिंक ऑन दैट एंड देन आई क्रिएट माय कंटेंट मेक फॉर द सेंस, मेक सेम। सेंस। लाइक यहाँ पे लोग अपनी वीडियोज़ में, और इट्स नॉट दैट बैड, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो लाइक यू कैन रीड बुक्स, यू कैन वॉच वीडियोज़, सो दूसरों के एक्सपीरियंस से ही लोग भी सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, राइट? इसीलिए लाइक दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। तो इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम द अदर एक्सपीरियंसेस। सो राजेश्वरी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लाइक मुझे बहुत थैंक अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट टाइम जब होगा तो हम लोग फिर से बात करेंगे, लाइक लेटर ऑन जब आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएँगे। होपफुली कि मेरा भी चैनल ग्रो हो जाए, और जितने भी आपका लोग हो देख ही रहे हैं भाई, रहा है। सब्सक्राइब करना राजेश्वरी चैनल को भी और मेरे चैनल को भी। सो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू हिज चैनल। थैंक यू सो मच राजेश्वरी। लेट्स थैंक एंड यू दिस सो मच लाइव फॉर हैविंग स्ट्रीम। थैंक यू सो मच फॉर बाय योर टाइम। बाय, टेक एंड केयर। हैव अ नाइस डे। यू टू, बाय। बाय।